कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. Hi guys, welcome to ukeguide. I hope you all are well. Now in today's lesson we are covering a song request and it is the very popular one Kabhi Kabhi Aditi from the movie Jaane Tu Ya Jaane Na. तो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ सुपर पॉपुलर एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे रेगुलरली रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट आई शुड ब्रिंग अ डिटेल्ड लेसन ऑन दिस सॉन्ग. Now guys, if you are excited, then you make sure that you like this lesson first because that is very important for me. And if you are new to this channel, please subscribe it as a first thing. Alright, and once you're done with that, you take out your uke, tune it in standard tune, and let's start with the lesson. तो गाइज़ इस अमेजिंग सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 5 कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड G माइनर, कॉर्ड C माइनर, कॉर्ड E फ्लैट, कॉर्ड B फ्लैट and chord F. Now in case you already know how to play these chords, then you can skip to the next part of this lesson. Else let's first learn how to play these chords. So to play chord G minor, you need to place your index finger on first fret first string, your middle finger on second fret third string and your ring finger on third fret second string. And chord G minor should sound like this. To play chord C minor, you need to place your ring finger as a bar on string 3, 2, 1 over fret 3. And chord C minor should sound like this. To play chord E flat, you need to place your index finger on first fret first string and then you need to bar the other 3 strings with your ring finger like this. And chord E flat should sound like this. To play chord B flat, you need to bar first fret with your index finger like this, your middle finger on second fret third string and your ring finger on third fret fourth string. And chord B flat should sound like this. To play chord F, you need to place your index finger on first fret second string and your middle finger on second fret fourth string. And chord F should sound like this. तो गाइज़ अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की और इस सॉन्ग में हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रमिंग पैटर्न विद अ चक स्ट्रोक. नाउ आई थिंक मेरे बहुत सारे लेसन्स में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस पैटर्न, बट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू हु आर जस्ट वॉचिंग दिस लेसन फॉर द फर्स्ट टाइम, strumming pattern with a chuck stroke means that you'll play 1 or 2 strokes and then you mute the strings with your hand, okay, like this. So in this song we are using a very easy strumming pattern. So you'll play it like this: down, up, chuck, down, up, chuck, down, up, chuck, down, up, chuck. So if you play this pattern on a particular chord, then it would sound like this. So down, up, chuck, down, up, chuck, down, up, chuck, down, up, chuck. तो गाइज पैटर्न ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ओवर डिफरेंट कॉर्ड्स, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो दैट कॉर्ड्स आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. सो ट्राई होल्डिंग डिफरेंट कॉर्ड्स like chord B flat, E flat, C minor, G minor and start strumming the strings. C minor, E flat, B flat, F. Now guys, let's talk about melodies of this song. So in this song I will try to explain you various melodies, and when you play these melodies together with the strumming pattern, you will get a very beautiful arrangement. Okay, so the first melody which we're gonna discuss would be
Alright, so you play this melody in the very first part, okay, and you start this song actually with this melody. So you play this along with chord G minor and chord C minor. Okay, so at one place you will play chord G minor like this, C minor, and you merge this strumming pattern with this melody. Okay, so इस melody को play करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. You start with string 2. Okay, you hold string 2 on 5th fret like this, and then you slide to fret 3. So slide and then play it once, then do it again, then you play the same thing on string 1. So on string 1 you will add an extra tap like this. So again, very slowly. तो गाइस अब बात करते हैं मेलोडी 2 की, और मेलोडी 2 को हम प्ले करेंगे इन द मिड सेक्शन ऑफ दिस सॉन्ग. सो मेलोडी 2 वुड साउंड लाइक दिस. ओके, तो आपको क्या करना है, यू स्टार्ट विद 3rd fret 2nd string, you play it 1, then you go to string 1, play it in open position like this. So fret 3 string 2, then string 1 in open, string 1 in open position, and then you play string 1 on fret 3. Do it 2 times, and then you do the same thing like you did for melody 1. Okay, so fret 5 to fret 3, slide, alright. So I'm sure you got the idea and how you can play these melodies. तो guys, इन melodies को हम यूज़ करने वाले हैं different parts में. तो आपको मैं song play part में जब ये song play करके दिखाऊंगा, then I will be showing you over the screen like when you have to play which melody, and along with that I'll be showing you over the screen like how many times you have to play your pattern on particular chords. So that way you can relate things well and you can play this song effectively. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है. ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay. कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही न खुशी और न मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा. ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay. सोच जरा मेरी जान तुझे हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर मेरी आंखों में आंसू आते हैं. गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं कि अदिति मान कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है. कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है कि
अदिति हंसते 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 हंस दे तू जरा, नहीं तो पर थोड़ा 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 मुस्कुरा। So guys, I'm sure you must have liked this lesson. Please subscribe to ukeguide and make sure you hit the bell icon, and I'll see you next week with an amazing new lesson. So until next time, do take care and bye bye.